Morning friends. In this video, we will study about the topic that is Ohm's law, and then we will study the next one topic which is also related to the Ohm's law, that is resistance or resistor. First of all, we will clear that what is Ohm's law. Dear friends, Ohm's law is given by a scientist whose actual or full name is George Simon Ohm. Simon Ohm, with the respect of that scientist, we also declared this law with the name that is Ohm's law. So in this video, first of all, we will clear that what is Ohm's law, because this is very important topic of this one chapter. Ohm's law means that in the previous class we cleared that what is resistor or resistance in symbolic form with the help of table. You can understand the electric circuit diagram. So for understanding of the Ohm's law, we are drawing a simple electric circuit diagram. First of all, we are using a resistor. This is the symbol of resistor, which is denoted by capital R, or generally we will call it as a resistance. Resistance and resistor both are different, but generally or in simple communication language, we can use the word resistance or resistor for the same position. And then we will connect this one resistor with the cell or battery by using a switch and an electrical component, that is ammeter, in series combination. For the measurement of electric potential, we are using voltmeter, right? So in previous class or in previous video, we cleared all the symbolic notation of all those electrical components which we will use in this chapter for the understanding. This one is the symbol of cell. This is the symbol of switch or key, which is in on conditions. This is the symbol of key, and this is the ammeter, which is an electronic device, electrical component, which is used to measure the amount of electric current in the circuit, and it is connected in series combination in the circuit. Why? Because it has low resistance, so that's why it can measure or calculate the actual amount of current passing through the circuit. This is the voltmeter, and we connect the voltmeter in the parallel combination. In next upcoming topic, we will study about that what is parallel combination and what is series combinations. Voltmeter is an electrical component or device. In previous class, we also cleared that which is used. Voltmeter is used to measure the electric potential difference or electric potential at the end of the conductors or cell of battery, to measuring the amount of electric potential in the circuit or passing through the conductor. So dear students, this is the actual or labeled diagram, electric circuit labeled diagram for understanding the Ohm's law. What is Ohm's law? First of all, we will clear. Dear students, according to the statement of Ohm's law, it is clear that Ohm's law means the electric potential difference across the end of the conductor. This is the conductor. The resistor or resistance will be also assumed as conductor, right? This is also called the conductor. So what is Ohm's law? Ohm's law means that the electric potential difference across the end of conductor, electric potential difference across the end of conductor. These are the ending points of the conductor, point A and point B, we can assume. So electric potential difference across the end of the conductor is directly proportional to the current flow through the circuit. This one statement is called Ohm's law. But very important or necessary condition in this statement is that if the temperature is constant. So we can write down the Ohm's law, that is, if the temperature is constant, then electric potential difference across the end of conductors or resistors is directly
proportional to the amount of electric current passing through the circuit. That is, in short way or in mathematical form, we can write down V proportional to I. V proportional to I, this one relation is called Ohm's law, and this is the actual description about the Ohm's law in word language. That is, if the temperature is constant, this is very important conditions before applying the Ohm's law. If the temperature is constant, then the value of electric potential difference across the end of the conductor, it means resistors, is directly proportional to the amount of electric current passing through the circuit. It means V proportional to I. So the conclusion is that if in the electric circuit, if we will change the value of electric potential, अगर हम यहाँ पे सेल और बैटरी जो हम यूज कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर उसकी वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, तो उस केस में इस कंडक्टर यानी कि इस रजिस्टर के एंडिंग पॉइंट पर जो यहाँ वोल्टमीटर के थ्रू जो हमारे को पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो फाइंड आउट होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज और डिक्रीज होगी. यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो उस केस में करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. दिस वन रिलेशन इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेशन, एंड दिस वन रिलेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द Ohms. So that's why this law is called Ohm's law, right? By simplification of this relation, then we will use a formula. When we simplify this one relation, then it will be equal to V is equal to IR. It means we are removing the sign of proportionality for calculating a result or for finding a result or forming a formula of electric potential. When we remove the sign of proportionality, directly proportional sign, then it will be equal to V is equal to IR, where R is equal to proportionality constant. This is called proportionality constant, or in another one form we will call it as a resistance of resistor, right? And I means electric current and V means electric potential difference or electric potential. By simplification of this one formula, we can write down the Moore form. That is, we can write down the Moore formula by using this one result, that is I is equal to V upon R, formula of electric current with the help of Ohm's law, or R is equal to V upon I. So these formulas we will use to solve the numerical based on the concept of category of Ohm's law. Now we are going to discuss the next one topic according to our NCERT book, that is resistance. But dear friends, before starting the topic of resistance, we will clear that there is a relationship between the electric potential or electric potential difference and the current. With the help of graph or with the graphical representations, we can understand the properties or relation between the V and I according to the Ohm's law. If we want to draw a graph in between the V and I, it means in between electric potential difference or electric potential and electric current, according to the Ohm's law, then graph will be like this. It means a straight line. Straight line is denoting the relationships, that is V proportional to I. तो अगर हम Ohm's law के अकॉर्डिंग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, in that case we will use the value of current on x-axis and value of electric potential difference at the y-axis. Then line will be always straight line and it will be passes through the center or origin. So this one line, straight line, will show that the V proportional to I, which is the Ohm's law. And it means by using this one graph, it is clear that when we will increase the value of electric current, so when we will increase the value of, we will change the value of electric potential difference or electric potential, in that case value of electric current will be also changed, because both are directly proportional to each other. And at the point, any one point, if you want to calculate the ratio of V and R, V and I, then it will be equal to the resistance, right? तो ये ग्राफ है जिसके थ्रू हम V और I के बिटवीन रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं. In the next
classes or in the higher classes, in 12th class, you will study about the one more relation, that is in the form of resistance. By using the graph, you can calculate the value of resistance with the graph. It means with the value of slope. By using the slope, you can calculate the value of slope. Means in the 9th class, we clear that slope means that is perpendicular upon base, and del V upon del I is equal to slope in this graph, which will be equal to resistance, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, जिसको हम हायर क्लासेस में जनरली यूज करते हैं. सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेजिस्टेंस. Our next one topic is resistance. What is resistance? And then we will study that factors on which value of resistance is dependent, because this one topic is also very important according to the exam. Before it, we will clear that what is resistance or the definition of resistance. Resistance means it is the property of substance or conductor which opposed to flow of current in the circuit. It is the property of substance or conductor which opposed to flow the current in the circuit. यानी कि ये कंडक्टर और जो रेजिस्टेंस होता है, यानी जो रजिस्टर होता है, जो सब्सटेंस है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है. हर एक कंडक्टर, हर एक रेजिस्टेंस की एक प्रॉपर्टी होती है. वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हमेशा इस चीज का विरोध करता है कि वो उसके अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देगा. दिस वन प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, एंड दैट कंपोनेंट और सब्सटेंस और कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टर, एंड वी विल डिनोट द रेजिस्टेंस और रेजिस्टर बाय कैपिटल आर. हम रेजिस्टेंस को भी कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और रेजिस्टर को भी हम कैपिटल आर से ही डिनोट करते हैं. यानी कि हम अगर बात करें यहाँ पर तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में कोई डिफरेंस नहीं मानते हैं, बट एक्चुअलिटी में इन दोनों में डिफरेंस होता है. लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वहां पर हम अंडरस्टूड होता है कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी एंड रेजिस्टर इज द एक्चुअल नेम ऑफ दैट कंपोनेंट और सब्सटेंस. राइट, सो वी कैन राइट डाउन the definition of resistance, that is, it is property or tendency of substance or conductor which oppose to flow of current in the circuit or electric circuit. This one property or tendency of conductor is called resistance. Now, and dear friends, that conductor is called resistor, right? And it is denoted by capital R. SI unit of resistance is ohm. Ohm is the SI unit, and it is represented by omega. This is sign. This one sign is called, इस तरह से, ये रिवर्स डायरेक्शन में जब हम U को इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से हमें डिजाइन को चेंज करना होता है. दिस इज द सिंबल. सिंबल किस चीज का है? ऐसा यूनिट है. किसकी यूनिट है? ऐसा यूनिट ऑफ किसकी है? ये रेजिस्टेंस की है. राइट, दिस इज कॉल्ड द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हुज प्रोनाउंसिएशन इज ओम. इसको हम क्या बोलेंगे? ओम. ओम इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड एक्चुअल नेम ऑफ दिस वन सिंबल इज ओमेगा. इस साइन को हम अगर ग्रीक लेटर, जो हम सिंबल्स की टेबल से जब हम यूज करते हैं, तो सिंबॉलिक टेबल के अकॉर्डिंग इस साइन का एक्चुअल नेम तो ओमेगा है. लेकिन यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के केस में जो इसकी ऐसा यूनिट है ओम, तो ओम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस साइन का यूज कर रहे हैं. राइट, तो इसका मतलब फॉर एन एग्जांपल, इफ इट इज रिटन 10 like this, so it means that this is the value of resistance 10. How we will read it? 10 ohm. 10 ओम. 10 ओमेगा रीड नहीं करेंगे. ओमेगा तो इसका
इस सिंबल का एक्चुअल नेम है जो यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, इसको हम किससे प्रोनाउंशिएट करेंगे, ओम से. सो द एक्चुअल name or actual reading, what will be the actual reading of this one value, that is 10 ohm. So we can understand that this is the value of resistance. So we have clear that the definition of resistance is that it is the property or tendency of the substance or conductors which oppose to flow of current in the circuit, and it is represented by capital R, and its SI unit is ohm, which is denoted by the symbol that is omega. Now we are going to clear that some factors are values on which value of resistance is dependent. We are going to study about the factors or values. So dear friends, there are 4 factors or values on which the value of resistance is dependent, and they are length of the conductor, second area of cross section area of the conductor, third is nature of the material by which conductor is formed, and fourth is temperature. By using these 4 factors, we can change the value of resistance. So that's why we are writing the topic that is factors on which value of resistance is dependent. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी कि वैल्यूज है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर. लेंथ ऑफ कंडक्टर इट मींस L. सो व्हाट इज द रिलेशन, दैट इज R प्रोपोर्शनल टू L. Which type of dependency in between the length of the conductor and the resistance, so that is R proportional to L. Length of the conductor resistance के between जो dependency है, जो relation है, वो कौन सा है, R proportional to L का है. It means that resistance will be directly proportional to the length of the conductor. It means if we will increase the value of length of the conductor, in that case value of the resistance will be also increased and vice versa. Similarly, the second value or factor on which value of resistance is dependent, that is cross section area of conductor. Cross section area which is denoted by capital A, and the relationship is R proportional to 1 upon A. Inversely proportionality relation. क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा कंडक्टर का, वो रेजिस्टेंस से क्या रिलेशन रखेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का. इट मींस दैट इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, वैल्यू ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज इंक्रीज, इन दैट केस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है, एक तो होता है एरिया और एक होता है क्रॉस सेक्शन एरिया. जो कॉर्नर पॉइंट होता है कंडक्टर का मतलब वायर. जैसे यहाँ पर हम इस वायर को यूज कर रहे हैं, राइट. तो वायर की फॉर्म क्या होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है. सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है तो ये तो इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, राइट. और इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया. जो ये सर्कुलर फॉर्म है, एंडिंग पॉइंट जो होता है वायर का, 2 एंडिंग पॉइंट होता है वायर में. तो अगर हम उसको फ्रंट साइड से देखते हैं तो वो सर्कुलर फॉर्म में दिखता है. तो जो सर्कुलर फॉर्म में जो दिखाई देता है एरिया, एंडिंग पॉइंट का कॉर्नर जिसको हम बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया. वायर का कंप्लीट एरिया नहीं, वो तो सिलेंड्रिकल पार्ट को भी कवर करता है, राइट. लेकिन हम यहाँ सिर्फ एंडिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं. तो इस एंडिंग पॉइंट वाला जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया. और इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर, राइट, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में होता है, एंड वी नो दैट एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करेंगे, इन दैट केस द रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज, एंड इफ विद द वैल्यू ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इज डिक्रीज, in that case the value of resistance will be increased. Why? Because the resistance is inversely proportional to the cross section area. तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है. सो ये सेकंड वैल्यू है जिसके ऊपर भी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, डिपेंडेंट होती है. थर्ड, नेचर ऑफ मटेरियल. नेचर ऑफ मटेरियल मीन्स वो सब्सटेंस जिस क्वालिटी का आप जिस कैटेगरी का यूज कर रहे हो, जिसके थ्रू आप उस कंडक्टर को फॉर्म कर रहे हो. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर. एल्यूमिनियम अगर हम कॉपर भी अगर हम यूज करते हैं, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वालिटी होती है. लो क्वालिटी एल्यूमिनियम, लो क्वालिटी कॉपर. इन दैट केस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी आल्सो चेंज. सो दैट्स व्हाई द रिलेशन इज दैट R proportional to
नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि अगर हम जिस मटेरियल का यूज कर रहे हैं, जिस क्वालिटी के मटेरियल को यूज कर रहे हैं, उस कंडक्टर यानी कि वायर को, रेजिस्टर्स को बनाने के लिए अगर हम उसकी क्वालिटी को अगर हम डिक्रीज करते हैं, इन दैट केस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी आल्सो डिक्रीज, और इफ we will increase the quality or nature of the material, in that case the value of the resistance will be also increased. So this is the third factor of value on which value of resistance is dependent. Now the next or last one is that temperature. Temperature is also a factor or value on which value of resistance is dependent, and the dependency is R proportional to T. रेजिस्टेंस की वैल्यू भी टेम्परेचर पे क्या होती है, डिपेंडेंट होती है. इट मींस द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर. If we will increase the value of temperature, in that case value of the resistance will be also increased, and vice versa. So that's why in the case of Ohm's law we have written in the statement that is if the temperature is constant. इसलिए हमने वहाँ पे Ohm's law का जब स्टेटमेंट स्टडी किया था तो वहाँ पर हमने फर्स्ट लाइन में क्या नोट किया था, if the temperature is constant, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू के चेंज होने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के अमाउंट में चेंजेस आएगा. तो अगर V और I के बिटवीन रिलेशनशिप को स्टडी करना है तो वहाँ पर हमें टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा. So these are four factors on which value of resistance is dependent. First is length of the conductor, second is cross section area, third is nature of the material, and fourth is temperature. And the dependency, length of the conductor dependency R proportional to L, length of the cross section area dependency R proportional to 1 upon A, nature of the material dependency R proportional to nature of the material, and similarly the temperature dependency, that is R proportional to T. By using these dependency or the relationships we can find out the nature or properties of the resistance. So we have completed the dependency or factors on which value of resistance is dependent. Now in the next one class we will study about the next one topic, that is specific resistance or special resistance, which is also called resistivity, right? But before it you have to write down some questions as a homework which is based on this video and try to solve them at your home.